Exercise 9.3. Exercise 9.3 question number 8. एग्जाम्पल चले थे जनरल ज्योमेट्रिकल मीन हो गया था रिलेशनशिप बिटवीन। सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन arithmetic mean and geometrical mean. Relationship between arithmetic mean and geometrical mean. देखिए arithmetic mean of A and B is equal to A plus B upon 2. Therefore, A is equal to A plus B upon 2. Relationship between arithmetic mean and geometrical mean of A. The arithmetic mean of A and B is equal to A plus B, and geometrical mean of A and B is equal to root AB. Therefore, G is equal to root AB. Or A minus G is equal to A plus B upon 2 minus root AB. A minus G is equal to, and A minus G is equal to A plus B minus 2 root AB upon 2. Or A minus G, relationship between arithmetic mean and geometric mean of two number A and B. So A, this is written as root A square, root B square minus 2 root A, root B upon 2. A is written as root A square, B is written as root B square minus 2 root AB. So A minus G is equal to root A plus root B का होल स्क्वायर, root A minus root B का होल स्क्वायर upon 2. So this is root A minus root B upon 2 का होल स्क्वायर is always positive. Therefore, A minus B is greater than or equal to 0. ये हमेशा क्या होगा? greater than or equal to 0. नेगेटिव नहीं हो सकता. A minus B is always greater than or equal to 0. Therefore, A is greater than or equal to 0. So arithmetic mean is always greater than or equal to geometrical mean. It means arithmetic mean is always greater or equal to geometrical mean. Arithmetic mean of A and B is always greater than or equal to geometrical mean A and B. ये है relationship between A and G. So relationship between A and G ये always positive रहेगा. It means A minus G is greater than or equal to 0. Therefore, A is always positive, greater than or equal to. ये है relationship between A and G. और next topic होगा example number 15. Example 15. Find the sum of the sequence. Find out the sum of the sequence. Find the sum of sequence. Sequence कर देते हैं 7, 77, 7, 7, 7, 7, 7 up to and ये सीक्वेंस का सम फाइंड करना है. हेल्प लेंगे जीपी की. किसके थ्रू करना है? जीपी.
sum of n terms, solution है इसका sum of n terms of sequence 7 7 7 7 7 7 7 up to n Sn is equal to 7 plus 77 plus 777 plus 7777 up to n terms. ये इस टाइप के सभी सवालों का क्वेश्चन सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा Sn is equal to 7 is common 1 11 111 1011 and terms 7 take out common 7 common या 7 बन जा 7 11 जा 111 1011 and multiply and divide. If you could fix program इसका multiply and divide by 9 both sides 9 by the numerator and denominator. Numerator denominator को 9 से multiply divide करें तो Sn is equal to ये दो का divide multiply 9 multiply each other 9 हो गया 9 99 999 और ये दो चाहो 59 plus up to n terms. सॉल्व करने का मेथड है सीक्वेंस है 7 7 कोई एक जीपी कुछ नहीं तो उसको सॉल्व करेंगे जीपी का कैलकुलेट करेंगे तो 7 टेक आउट कॉमन एंड आफ्टर देन मल्टीप्लाई बाय 9 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 9 each term and on Sn is equal to 7 upon 9 10 minus 1 and 99 is written as 100 minus 1. This is 1000 minus 1 and like n terms. If you like n terms. 9 is written as 10 minus 1, 99, 100 minus 1, 999, 1000 minus 1 and this is written as 7 upon 9. First term. Take first term at a time. 10 plus 100 plus 1000 and plus n term and minus 1 minus 1 minus 1 minus common 1 plus 1 plus 1 plus 1 n times ये 7 upon 9 10 plus 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब and n terms और minus 1 n times sum of n terms 1 plus 1 adding n times sum of 1 is also 1 n ये gp का sum of n terms है तो मैं इसको हटाऊंगा कैसे ये देखिए भाई ये इस टाइप के सभी क्वेश्चंस के लिए एक मेथड है sum of n terms of simple this lesson 7 is common and we have 5 with 5 4 to 2 1 11 और 9 से multiply divide 9 10 minus 1 100 minus 1 1000 minus 1 फर्स्ट टर्म को एक साथ में लिखा है सेकंड टर्म माइनस कॉमन ले 1 plus 1 एंड ये हो गई जीपी और जीपी के सॉल्यूशन के लिए इसको आगे सॉल्व करेंगे ऐसे इसी को लिखते हैं ऐसे इक्वल टू 7 by 9 n terms of GP तो a r is to power n minus 1 upon r minus 1 और minus n तो 7 upon 9 a is equal to 10 और r is equal to 10 तो 10 dot 10 की power n minus 1 upon 10 minus 1 minus n is GP में a is equal to 8 and common ratio is also 10 a is equal to 10 and r is equal to 10 तो ये r की पावर sum of n terms ये आ गया 7 upon 9
ऑफ गिवन सीक्वेंस। ये है इस सीक्वेंस का सम 7 upon 9, 10, 10 minus 1 9, 10 is power minus 1 minus n। इसी फॉर्म में इसको छोड़ दीजिए, ये इसका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे 7 7 रिपीटेड डिजिट, वो इस तरह सॉल्व होंगे। ये था एग्जांपल नंबर 15। Example number 16. A person has 2 parents, 4 grandparents, 2 parents, 4 grand and 8 great grandparents. Parents. And so on. So, find the number of ancestors and ancestors during the 10 generations preceding 10 generations. Sum of ancestors up to 10 generations. During 10 generation. Solution. ये 2 parents GP बन रही है। GP is 2, 4, 8, 10 terms। हमें सम फाइंड करना है। Here first term A is equals to 2, common ratio 4 divided by 2 is equals to 2 and n is equals to 10. So sum of ancestor Sn is equals to a r raised to power n minus 1 or r minus 1, r is greater than 1। वैल्यूज हमें आपके पास पुट कर दीजिए। 10 जनरेशन तक का सम निकालना है और ये S है A 2 raised to power 10 minus 1 upon 2 minus 1 और 2 minus 1, तो S 10 is equals to 2 into 2 raised to power 10 1024 minus 1, 2 raised to power 10 is equals to 1024 होता है। तो ये 2 into 1 2 3 6 4 0 2 S10, उसके एंसेस्टर का सम कितना हो गया 2046। तो सम ऑफ द नंबर ऑफ एंसेस्टर प्रेसिडिंग द पर्सन इज, आंसर दूसरी बार द सम ऑफ एंसेस्टर preceding the 10 generation is equal to 2046। ये था एग्जाम्पल नंबर 16। 2 पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और इसके एंसेस्टर्स का आपको निकालना सम 10 जनरेशन के लिए। तो ये GP 2 4 8 10 terms and A is equals to 2, R is equals to 2 and N is equals to N। सम ऑफ फैक्टर्स के फॉर्मूले में अब ये ध्यान रखना बहुत हाईएस्ट पावर फैक्टर निकालिए क्योंकि पावर 1024 होता है। ये आ गया 2046। सम ऑफ उसके एंसेस्टर्स का सम है पिछली 10 जनरेशन के लिए। ओके, geometric mean of two number AB is root AB। ये तो मैं बताया G is equals to root AB। अब यहाँ numbers insert between A and B
A and B so that resulting sequence is in GP. तो ये GP बन गई है GP A G1 G2 G3 up to Gn and B. N numbers insert between A and B so that resulting sequence are in GP is in GP. A G1 G2 comma G2 comma G3 up to Gn and numbers ये नंबर्स इंसर्ट करेंगे बीच में जीपी है तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n plus 2 1 और ये 2 और n है n plus 2 टर्म therefore n plus 2 टर्म of GP is equal to B. So A n plus 2 minus 1 A into R is to power is equal to B. Formula A n is equal to A R is to power n minus 1. N plus 2 term of GP is B. So n plus 2 term A R to power n plus 2 minus 1 and A R is to power n plus 1 is equal to B. N plus 1 is equal to B upon A. Therefore R is equal to B upon A raised to power 1 upon N plus 1. ये common ratio. This is common ratio for n number insert between A and B. R is equal to B upon A to power 1 upon N plus 1. So therefore G1 is equal to A plus R. G1 is equal to A plus R और A plus B upon A की power 1 upon N plus 1 and G2 is equal to A plus AR. A plus R नहीं आएंगे G1 is equal to AR. G1 equals to AR. G1 AR और A into B upon A raised to power 1 upon N plus 1. And G2 is equal to AR square A B upon A की power 1 upon N plus 1 का square. G2 is written as A B upon A raised to power 2 upon N plus 1. Here similarly Gn, तो Gn क्या हो जाएगा? हमें ये फॉर्मूला याद रखना है. For n terms insert between A and B so that the resulting sequence is in AGP हो गई. तो इसके लिए कॉमन रेशियो R का B अपने पावर 1 plus 1. तो फर्स्ट नंबर G1 या A into B अपने पावर 1 A and B are given number and n a number of inserting numbers. ये फॉर्मूला याद रखना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ध्यान से देखना भी. एग्जाम्पल नंबर 18 to 17. Example 17. Insert three numbers between 1 and 2250 so that the resulting sequence. Let the three numbers are G1, G2, G3. Insert between A and B. दिया गया A G1 G2 G3 and
and B. R and GP. R and GP. Here A is equals to 1 and B is equals to 256. 1, G1, G2, G3 and 256 R and GP. दो मेथड है, पूरा मेथड रेकॉर्ड करें, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम। ये GP तो ये फोर्थ ऐसे भी हमने निकाला हुआ है R is equals to B upon A की पावर 1 upon n plus 1। A and B are given n number of inserted number। यहाँ n is equals to number of inserting numbers। n equals to 3 number insert करें तो n equals to 3 and A is equals to 1 and B is equals to 256। therefore R is equals to B 256 upon 1 upon 3 plus 1। R is equals to 2 की पावर 256 की पावर 1 upon 4 और R is equals to this is 4 raised to power 4। तो ये R is equals to 4। 256 लिखते हैं 4 raised to power 4 16 का स्क्वायर और 1/2 4 से 4 कैंसिल। R is equals to ये then G1 numbers G1 is equals to AR और AR होगा A1 into R4 is equals to 4 and G2 is equals to AR square 1 into 4 का square 16 and G3 AR2 G1 AR square AR2 G3 is equals to 1 into 4 का cube this is 64। so 3 inserted numbers are 10 numbers are 4 16 and 64। ये है इसके अंदर जीपी बन जाएगा। let the 3 number are G1 G2 G3 insert between A and B। A G1 G2 G3 B यानी A की वैल्यू 1 है B equals to 251 G1 G2 G R GP। ये फॉर्मूला है GP के लिए R equals to B upon A 1 upon n plus 1 where n है number of inserted numbers। number of n number of 3 A is equals to 1 R equals to 2 B equals to 56 R equals to 4 आ गया। then G1 ऐसे है G1 is equals to AR G2 is equals to AR square G3 is equals to AR cube। put the value of A and R numbers are 4 16 64। ये है inserted number between 1 and 256 are 4 16 and 6। example number 18 if the arithmetic mean of A and B is equal to 10 and geometrical mean of A and B is equal to 8 find A and B। हमें A और B फाइंड करें फाइंड द नंबर A and B। example number 18 solution arithmetic mean of A and B therefore are A is equals to 10 and G is equals to 8। arithmetic mean of A and B is equals to A plus B upon 2 is equals to 10 and under root A is equals to 8 is arithmetic mean A is equals to A plus B by 2 and G is equals to 3। find the AB so A plus B is equals to 20 and root AB square root इसका AB is equals to 64 taking square both sides। so A minus B
वैल्यू रख दीजिए a minus b is written as a minus b square equals to a plus b square minus 4ab. A minus b square is written in the form of a plus b daily. A plus b का square minus 4ab. इसको एक्सपेंड करेंगे a square plus b square plus 2ab. A minus b is written as sum of a and b product of a. ये a minus b is equals to under root a plus b का स्क्वायर माइनस 4ab. तो a minus b is equals to under root put a plus b is equals to 20 का स्क्वायर माइनस 4 into 64. This is a minus b is equals to under root a plus b की वैल्यू पुट कर दी and a b की a 400 minus 128 और a minus b is equals to कितने बचेंगे 128 400 minus 4 4 just 16 4 4 just 16 और 4 4 just सही करो 4 4 just 16 carry 1 4 4 64 256 आएगा और a minus b is equals to 144 400 minus 256 is equals to 144. Taking square root plus minus 12 तो a plus a minus b is equals to 12 और a minus b is equals to minus 12. So a minus b is equals to 12 and a plus b is equals to and a plus b is equals to 20. Add करिए 2a is equals to 32, a is equals to 16. A is equals to 16, then b is equals to जब put करते हैं a is equals to 16, then b is equals to 4. b is equals to 4. और प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए क्या लेंगे पॉजिटिव. तो two numbers are 16 and 4. Two numbers are 16 and 4. And again, if a minus b is equals to minus 12, a plus b is equals to 20, adding 2a is equals to 8, a is equals to 4, then b is equals to 16. So two numbers are a 16 and b 4. The two numbers are हमें दो नंबर निकालने थे a and b की वैल्यू दे दें a and b. इसका आंसर है इधर लिख देता हूँ a is equals to 16 और b is equals to 4 और a is equals to 4 and b is equals to 16. तो numbers are 16, 4 और 4, 16. बात देखिए ये था एग्जांपल नंबर 8. किसी को दिक्कत है समझ सकते हो. अर्थमेटिक मीडियम में n is equals to 10 and ज्योमेट्रिकल मीडियम में n is equals to 8. a बराबर 10 c a is equals to a plus b by 2 a is equals to 8 a plus b 20 square किया a is equals to 64 and a minus b sum and product की फॉर्म में लिख दिया. तो a minus b is equals to plus minus 12 positive negative a 16 b 4 और negative 4 b 16. तो two numbers are 16 और 4 और 16. ये था एग्जांपल नंबर 18. लास्ट एग्जांपल था. कल हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 को आगे बढ़ाएंगे. आप कोई प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और बिल्कुल लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, फिर मैं उनको बोर्ड पे बता दूंगा. ओके.